So as I was saying, these two are the most important numbers जो हमारे date of birth से आता है. Coming to the next set of numbers है जो हमारे नाम से आता है. अब हमारे नाम से how do we get the numbers? Each alphabet is assigned certain numbers. What are those numbers? We'll talk about it later. But हर alphabet का एक number होता है in the numerology का system. So when we add those numbers, we get different combinations of numbers. Like जैसे हम लोग first name का numbers लेते हैं, केवल vowels का numbers लेते हैं, consonants का numbers लेते हैं. So we get different combinations of numbers and they all have certain percentage of importance in our chart. So this is how we get two sets of numbers. Now what is interesting is जो मैंने शुरू में बताया आपको कि जो date of birth है, definitely it is our gift from the God. So we cannot change them. But जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर आपका एक भी पहिया अलाइनमेंट में नहीं है तो वो गाड़ी क्या ठीक से चल पाएगा? नहीं. It will have those bumps and eventually it will stop moving forward. So what is important is we need to bring them all in alignment. So can you please mute yourself? Someone is on unmute. Can you please mute yourself? So when these numbers are not in alignment, similarly जब हमारे birth date के numbers और नाम के numbers alignment में नहीं होते हैं, तो we start facing different kinds of obstacles, delays and issues in our lives. This is where numerology plays a very important role by bringing your name numbers in alignment with your date of birth. इससे क्या होता है, आपके जो अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, जो डिलेज आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं. सो योर ऑल दोज प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स गेटिंग सॉल्व्ड. Another very important thing which I want to mention right at the onset is कि अब लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर नाम को अलाइनमेंट में लाएंगे तो मतलब नेम में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा. Definitely नेम में करेक्शन करना पड़ेगा, but the best part is we don't have to do it legally anywhere. इसका सबसे बड़ा प्रूफ है if you see the celebrities all around us, be it आयुष्मान खुराना, be it ऋतिक रोशन, आप कोई भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लो, सबने अपने नेम में करेक्शन करवाया है. Those extras H, A या जो भी अल्फाबेट एडेड होते हैं, these are only at the max. उनको सोशल मीडिया पे चेंज करना पड़ता है. Even if people are not comfortable changing on the social media, there is a particular way जो आपको एक certain time तक बस अपना new name spelling को practice करना है and you will start getting the effects. If you will see the passports of these people or any documents of celebrities or anyone, उनका original name ही होता है. So because this is one of the biggest apprehensions people have कि do we have to change it legally? No, we don't have to change it legally. There are no paperworks involved. So you are sorted on that end. So how does numerology help us? It definitely, before you start helping others, हम लोग बोलते हैं ना, दूसरों की मदद करने से पहले आप अपनी खुद की मदद करिए. So this is how this also applies, and I strongly believe in this also कि आप पहले न्यूमरोलॉजी को खुद को समझने के लिए अप्लाई कीजिए ना. आप देखोगे कि आप ब्यूटिफुली अपना स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके क्या टैलेंट्स है. आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी तो इस मोड़ पे आते हैं ना लाइफ में कि यू डोंट नो व्हाट डू यू वांट टू डू, और देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा. Once you start understanding your numbers, एक बार आप अपने numbers को समझना शुरू कर दोगे, all of these problems will get sorted. You will see कि आपको कितना clarity आ गया है. You will start understanding them much better.
So this is the magic of numbers. You know, numbers reveal so much for you. And the best part is numerology and numbers are very easy to understand. Unlike other sciences, you know, if we talk about astrology or other sciences, they are much more complicated, and it takes a lot of time to understand that, imbibe that and start practicing, and uske baad bhi accuracy nahi aata hai. So numerology comparatively is much more easier, less time taking, and very, very accurate. So that is a very big advantage of understanding and learning numerology. When we talk about, as I told you in the beginning, there are lots of systems of numerology, you know, more than 50 established systems. So definitely we will not talk about all of it, but there are three which are very old and the most important ones. The first is the Kabbalah system. Kabbalah हम लोग बोलते हैं कि सबसे oldest system of numerology है. However, it is based on tree of life. इससे mostly tarot का evolvement Kabbalah system से हुआ है. ये इतना prevalent नहीं है practice में. The two most practiced systems of numerology are Chaldean and Pythagorean. Now, Chaldean and Pythagorean दोनों बहुत famous system है, and there is, हम बोल सकते हैं, kind of tug of war between the two systems, कि Chaldean better है कि Pythagorean better है. And people जिनको थोड़ा भी numerology का idea है, या when they come to learn and they know about the systems, they always ask, which system is better, कौन सा हमें सीखना चाहिए, या कोई अपना numerology chart भी करवा रहे. So if people have idea, they do ask, you are doing it or based on which system. So let me tell you, there's nothing that this system is better than the other. Both the systems are complete in its own way. आप अगर Chaldean भी सीखते हो तो आप एक certified numerologist हो. You can do name corrections along with all the other services जो एक numerologist कर सकता है. Similarly with Pythagorean also. तो अब आप बोलोगे कि then what is the difference between the two? The main difference is एक तो numbers का, different alphabets are assigned different numbers in both the systems. इसमें अगर R का value एक में 9 है तो किसी में 2 है. So that is the main difference. Second difference is Chaldean में 9 कोई भी अल्फाबेट को 9 वैल्यू दिया ही नहीं गया है, बिकॉज इन Chaldean system 9 is considered very, very sacred. It is considered as a number of completion. तो Chaldean system में they haven't assigned number 9 to any alphabet. However, more than these two, ये तो एक learning के aspect से है. जो main difference है Chaldean and Pythagorean में, Pythagorean is much more detailed. Detailed in the sense कि जब आप Pythagorean system से किसी का भी numerological analysis करते हो, आप डे वाइज तक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आज आपका ये दिन कैसा जाएगा. So you can predict your days, weeks, months, years, everything. टू एक्सप्लेन, अगर मैं बोलूं, अगर कोई मुझसे आके पूछता है क्या मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ कि नहीं, मेरे चार्ट में है क्या कि मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा कि नहीं, तो बेस्ड ऑन बोथ द सिस्टम्स आई कैन गिव एन आंसर येस और नो. हाउएवर वो गाड़ी आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, दैट पाइथागोरियन कैन टेल यू बिकॉज इट इज दैट डिटेल्ड. हाउएवर फॉर द बिगिनर्स Chaldean is strongly recommended, because अगर आप straight away Pythagorean सीखोगे तो you will get complicated, you will not be able to grasp it. And in any case, India में Chaldean is very prevalent. Pythagorean has started picking up now, but अभी भी Chaldean is the most prevalent system in India. So अगर अब आपको कोई बोलता है कि which one is better, there is nothing as such कि ये system better है. Both are complete in its own sense. पूरा आपको नॉलेज मिलता है. आप नेम करेक्शन के साथ न्यूमरोलॉजी में और भी बहुत सर्विसेज होते हैं, which I will tell you आगे अभी in few more slides, which you can practice, be it with any system. It's just that you have to practice and
stick to one system with faith. आप multiple systems भी सीख सकते हो, but obviously one at a time, so that you can grasp it completely. So these are the different types of numerology जो system है. How numerology help us? Now numerology can help you in numerous ways. I did tell you शुरू में थोड़ा सा that सबसे पहले तो you will start understanding yourself much better. When you start understanding yourself, your capabilities, your strengths, weakness, तो आप definitely right decisions ले पाओगे. आप अपने आप को तो समझोगे, आप सामने वाले को भी मच बेटर समझोगे. हाउ? विच आई विल टेल यू अब नेक्स्ट स्लाइड में. व्हेन आई स्टार्ट डिफाइनिंग द नंबर्स फॉर यू, आप देखोगे अरे ये बंदा तो नंबर 3 है, दैट इज व्हाई वो ऐसा बिहेव करता है. आपका जजमेंट तुरंत चला जाएगा, जो हम लोग जजमेंट ले आते हैं हर चीज में. सो दैट विल स्टार्ट गोइंग अवे. It will start improving your relationships. This is one of the things, because आपका perspective better हो जाता है. Along with it, we apply numerological remedies as well, which definitely help you in all aspects, be it your relationship, your wealth, your career, your health. वो तो है ही, but along with it, from a very practical point of view also, I'm telling you, because you start understanding people around you much better, you start understanding अपने आप को much better, so half your problems are resolved then and there, right? You will understand, start identifying your opportunities. बहुत बार हम लोग बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट गो फॉर दिस, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा. आप देखोगे when आपकी जब आपको नंबर्स के मीनिंग समझ में आ जाएंगे, you will start seeing कि numbers are speaking to you. You will know that this is the opportunity for you, this aligns with your personality, with your talents, and you should grab it. So this is how you will start taking up those opportunities. So that is very important, and definitely when all these will happen, so it will improve your life. So this is how numerology helps you. Now coming to the main part, today I will talk about number 1 to 9, and I will define the characteristics of each number, because this is the base of numerology. Now in numerology, what happens is number 0 is not assigned any planets. We say that it is a number of completeness. कैसे? आज हम लोग कोई भी नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है. Like if we add 0 in front of 1, it becomes 10, right? So obviously 10 is 10 times 1, so its value increases. So however, it is not assigned कोई भी planet. Planets start from number 1. जो number 1 होता है उसका planet होता है sun. So number 1 में कौन कौन से numbers आते हैं? 1, 10, 19 and 28. You all can make a note if you all want to, अगर आपके पास paper pen है तो, so that later अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आया, या if you have any questions you can come back to it, or if you are comfortable just listening, you can just listen also. So number 1 has planet sun, and उसमें numbers आते हैं 1, 10, 19 and 28. How? आप 28 को 2 + 8 करोगे तो 10 आएगा, 10 को फिर 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा. That's how we always come to the single digit when in numerology. अब 1 कैसा होता है? हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 ऐसे लिखते हैं ना, straight. So it is like this. So उसके characteristics कैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं झुकता है 1. They are they are the leaders kind of people. सन कैसा होता है? सबको रास्ता दिखाता है ना, इट गिव्स लाइट टू एवरीवन. सो दैट्स हाउ नंबर 1s आर. उनको हमेशा लीड करना होता है. अगर आप लोग में से कोई भी नंबर 1 को जानता है, डोंट कैलकुलेट द फुल डेट ऑफ बर्थ, बट अभी अगर आप किसी का बर्थडे भी 1, 10, 19 या 28 को आता है तो आप देखना उनमें कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक होगा कि उनको अपना बात ऊपर रखना है. दे वॉन्ट टू लीड, दे कैन टेक इनिशिएटिव्स, they are the thinkers. उन लोग नए bright ideas लेके आते हैं. That is how number 1s are. But on the flip side,
उन लोग बहुत ईगोइस्टिक भी होते हैं. नंबर वंस को झुकना नहीं आता है. दे डू नॉट बेंड, राइट? So this is the flip side. They are at times very, very rigid with their opinions. जो बोल दिया सो बोल दिया. They are not flexible. This is how number ones are. Moving on, जब number one के बाद है number two. Two, how do we write? There is a curve and then a straight line. So twos are ruled by moon. And the curve shows what? कि they are very, very adaptable. Moon क्या होता है? You know, very beautiful, calm, शांत है, and adaptable, flexible people. नंबर वंस जो है उन लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं. ऑन द अदर हैंड नंबर टूज जो है दे लाइक वर्किंग इन टीम. आप कोई भी नंबर टू को काम दे दीजिए और बोलिए कि खुद से करना है, यू नो, दे विल गेट नर्वस और पैनिक. And if you ask them to work in a team, लोगों के साथ, they will do it very beautifully. कभी कोई झगड़ा हो रहा है किसी का, don't go to number ones. वो पूरा झगड़ा करवा के ही मानेगा. एंड जो नंबर टू होगा ना, वो डिप्लोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. वो ये भी नहीं बोलेगा कि आपकी गलती है, वो ये भी नहीं बोलेगा कि सामने वाले की गलती है. सो दैट्स हाउ नंबर टूज आर. बट ऑन द फ्लिप साइड नंबर टूज आर वेरी, वेरी इमोशनल. बहुत सेंसिटिव होते हैं. उनको छोटी छोटी बातें बहुत चुभ जाती है. They are overthinkers. They think a lot. So that's how number twos are. पर नंबर वन कैसे होते हैं? जो घर में फादर फिगर होते हैं ना, you know, very strict leaders, at times rigid. and number twos होते हैं जो मदर, जो घर में सबको बैलेंस करके चलते हैं. So अगर फादर एंड मदर हो गया, so how will the number three be? Number three है like a child. You know, it is ruled by Jupiter. And बच्चा कैसा होता है? You know, happy go lucky. कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है. They are in their own world, right? And very, very creative and imaginative. That's how a child is. बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, वेरी क्रिएटिव. हम उनको सिखाते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं कि नहीं ये ट्री है तो आपको ग्रीन कलर ही करना पड़ेगा. बट आप बच्चे पे छोड़ दो तो वो उसको ब्लू भी कर सकता है, उसको ऑरेंज भी कर सकता है, राइट? दिस इज देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. सो दैट्स हाउ नंबर थ्रीज आर. नंबर थ्रीज के पीपल, दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इमेजिनेटिव. दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. बट अगेन ऑन द फ्लिप साइड, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन कोई भी एक जगह पे बहुत ज्यादा नहीं रहता है. दे कीप स्विचिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. सो दैट्स हाउ नंबर थ्रीज आर एज वेल. You know, they can't stick to one thing for very long. They keep jumping from one thing to another. उनका concentration is very, very less. Then moving on, the next number is 4. 4 number है राहु का. And how do we write 4? You know, all straight lines. तो 1 में तो single straight line था. 4 में there are 3 straight lines. So can you imagine how rigid number 4s are? उनको तो बस अपना ही बात ऊपर रखना है. They are very, very structured. जो काम होना है वो ऐसे ही होना है. दे वर्क वेरी वेल इन ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, जहाँ पे हायरार्की रहता है, इन मैनेजमेंट पोजीशंस. दे डू रियली वेल क्योंकि दे वर्क इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे. बट अगेन नंबर फोर्स थोड़े लेजी भी होते हैं. एंड एज आई सेड कि रिजिड भी होते हैं. सो दैट इज द फ्लिप साइड वेयर दे, मतलब कि उन लोग दे गेट स्टक with one thing कि ये ऐसे करना है तो this is how it should be. So this is the flip side of number 4. And number 4 के बाद आते हैं number 5. So you know, if we talk it in a very simple and a story way, number 1 is the father, number 2 is mother, 3 is child, 4 is, you know, हम लोग structure दे रहे हैं तो घर बना रहे हैं. number 5
क्या है? इट इज अबाउट ट्रैवलिंग. घर बना लिया, मम्मी पापा बच्चे हो गए, तो क्या है, वी विल गो आउट ना, ट्रैवल करेंगे. सो दिस इज व्हाट नंबर 5 इज अबाउट. Ruled by Mercury, number 5 is all about traveling, communication, talking. Number 5s को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है. Number 5s are again very intelligent people also, and but they love traveling. उनको बात करना, उन लोग हवा से भी बात कर सकते हैं, and they do really well in stock market हुआ या सोशल मीडिया हुआ, कहीं पे भी मार्केटिंग का काम हुआ. So number 5s are very good in that. And on the flip side, they are very very volatile. Again, they keep fluctuating. उनका बहुत highs and lows होता है. उनको कोई भी एक चीज consistently, be it in relationship or work, they are little inconsistent. So this is one of the major drawbacks of number 5. Number 6, 6 number is a number of Venus. It is a number of luxury. So Venus is all about beauty, luxury, and along with it responsibility. Number 6 बहुत responsible होते हैं. They take care of things. They will go out of their way to do things for you, to take care of the family, house, children. They are like the lady of the house. But जहाँ over responsibility होता है, definitely people nagging हो जाते हैं ना. It is kind of, they start poking into your business. So that is one thing जो number 6 को they should be careful about. Coming to number 7, number 7s are ruled by Ketu. They love their own me time. उनको खुद के साथ time spend करना बहुत अच्छा लगता है. But they are very very research oriented. They are very deep thinkers. They can think really deeply. तो जितने भी जब हम लोग आगे और पढ़ेंगे later, you will see that most of the detectives have number 7s very prominent in their chart, because they can think जो हम लोग नहीं सोच सकते हैं. So that's how number 7s are. But because they are very closed, mostly number 7s, they are very closed to they are prone to depression. जो mostly suicides भी होते हैं ना, उनके chart में भी number 7 is very prominent. So that is because they overthink a lot. तो number 7s का ये एक बहुत बड़ा flip side है. Coming to number 8, number 8 में there are 2 circles. The upper circle is about your spiritual world, your lower circle is about your materialistic world, and number 8 is about balancing the 2 worlds. But number 8 जो people होते हैं, they are very hard working, very honest people, and they can do any work. मतलब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो. They like to be the leaders in the top positions, in managerial position, but definitely very very hard working people, and they are ruled by Shani, Saturn, जिसको हम लोग बोलते हैं. But again, as I said, they need to balance the 2 worlds, because at times number 8 इतने ज़्यादा power hungry हो जाते हैं that they forget everything else. So if they don't learn how to balance, then it becomes difficult for them to survive. And number 9 is ruled by Mars, Mangal. So they are definitely very aggressive, क्योंकि you can understand Mars is the hottest planet. But again, number 9s are very very giving. उनको आप कुछ भी उनको बोलो, कुछ भी उनसे मांगो, उनके पास नहीं भी होगा तो they will want to help you किसी भी तरीके से. So they love doing things for others, for the society, and they are very helpful by nature. So they work very well in pharmaceutical industries हुआ, police हुआ, army men हुआ. we have a lot of number 9s over there. Or because उनमें बहुत energy and aggression होता है, so a lot of sports person are also number 9. This is in very brief about the numbers 1 to 9, ki kin planets they are ruled and what are the basic characteristics. These are just the very basic characteristics, but har jan ke life mein वो कितना prominent है, it definitely depends कि where are those numbers placed in your chart. So
at this point of time, since you all do not know all the calculations, but अगर आप किसी का भी birth number से उसको relate करो, if someone is number 3, तो if it's 3, 12, 21 और 30 जिनका birth date है, आप देखोगे उनमें एक creative instinct होगा. They will have some. अब उन्होंने उसको उभारा है कि नहीं, that is a different story altogether, but they will have some creativity into them. So that is how, as I told you, this is very basic, but this is how once you start understanding the numbers, once you go into the depth of numbers, आप समझोगे कि numbers हम लोग को किस तरीके से it is talking to us. आप किसी भी इंसान को कितने अच्छे से, you can completely read them, you can analyze their chart, and obviously then we can work on the person. As I said, how it helps us. Yes. It will help you, take care of your health, wealth, relationship, career, everything. How health? Because based on the numbers, each number rules certain body parts also. Her number ke saath, there are certain body parts associated. So once you understand, then you also get to understand what are the food which you should be eating, what are the probable things you should be careful about, if you're more prone to headaches, so what are the precautions you should be taking. And definitely when we apply the remedy, so that is the best thing कि हम लोग जब based on numerology उसका numerological remedies करते हैं, so we get solutions also for that. Numerology is a solution based science. So ऐसा नहीं है कि you just get to know कि आपके साथ क्या हो रहा है या what are the things in your chart or in your numbers, but you get a solution also based on them. You can make your right career options based on your numbers, because you will get to understand what are your strengths, which are the areas you will flourish in. See, as if I say that number ones, they can't work in partnership, it does not mean कि कोई भी number one partnership में work नहीं करता है. It means कि अगर आप independently work करोगे तो आपका growth ज़्यादा होगा, आपका journey ज़्यादा smooth होगा, right? And that is what we all want. So each numbers, they have certain careers where you can really flourish. Your journey will be much more smoother. So it helps you to make your right career choices. And definitely relationship, आज be it your marriage relationship, your business partners, when two people or more than two people are coming together, if your thought process don't match, if your way of thinking, आपके सोचने का तरीका, it is not aligned with each other, there is bound to be rifts. So we can understand through numbers. So numbers helps us a lot in all aspects, be it our health, wealth, or relationship. And as I was talking earlier, that what are the kind of remedies we can do once we learn numerology completely. Definitely हम लोग name correction तो कर ही सकते हैं, but along with it there are numerous other services also which you can do for yourself or for people around you or as a professional for others. You can do company names, आप बेबी नेम्स कर सकते हो, हाउस नंबर्स कर सकते हो, व्हीकल नंबर्स, सिग्नेचर एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, baby birth ka dates you can do as per numerology. So there is endless services. It's because see, once you start practicing numerology, even as a professional, not everyone will want to go for name correction. So you have a lot of things in your kitty to offer to your clients, your prospective clients, and which are at different price points for them. So once you learn one modality also, you can offer all of these to your clients. So that is very, very good thing which you can do with numerology. And yes, numerology is a very, very thriving industry. It is a multi-billion-dollar industry. It is not just in India, but abroad also. There's a huge clientele of numerology. People are really interested in understanding the numbers. What are the numbers all about? How it helps us? How can we, imbibe this in our lives?
So numbers really help us a lot, and it is a very thriving industry which is coming up. And once you learn any one system, you get certified, you can start practicing as a numerologist, and then you can just have your own plans, whether you charge your clients by the hour or you make some packages, which obviously you are provided the entire support once you learn the system. But there are numerous options for you to make it as a career as well. We at Anchor of Hope, we have 100% live online classes. The programs are very, very well defined and structured. And as I told you in the previous slide itself, that we train you in such a manner that you can practice this independently, and go on the path of self-employment and start earning from the very moment you get certified as a numerologist. So there's no such thing that first you have to learn it, then you have to practice it for a certain period of time, and then only you can start applying it with your clients. You can do it immediately, and we give you the full support. So if anyone is interested in, we have a batch which is coming up from the 2nd of December, which is a tentative date. And the timings would be evening 7 to 8:30 p.m. Again, this is tentative. And if anyone wants to learn numerology fully, we would be starting with the Chaldean system. So you can do that. And at this moment, I will just stop the screen sharing once. And if anyone has any questions, first we'll take up that and then we'll talk further. If anyone has questions, you can start raising your hands. I'll just unmute you. Can you please help me with the details of the course, whole details of the course, like what will be in it? Sure. And, what are the fees structures and everything? Absolutely. I'll share it. Just give me 2 minutes. I think there are a few more questions. I'll definitely share the entire details of the course and the fee structure. Yeah, right? thank you. Yeah. Yes. So Pankaj. Yes, Pankaj, you have a question? यस मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आपने नंबर बताए हैं, ये मूलांक पे काम करते हैं या भाग्यांक पे? मूलांक पे। मूलांक पे। मूलांक एंड भाग्यांक दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मूलांक हुआ आपका जो बर्थ डेट हुआ, सपोजिंग यस मैम, मैं समझ गया। अगर आप 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो मूलांक है शुरुआत के। हाँ। और अगर पूरे डेट ऑफ बर्थ को कन्वर्ट करे तो 1 डिजिट में, तो ये भाग्यांक है। भाग्यांक है। तो आपका जो न्यूमरोलॉजी होता है ना, उसमें ये दोनों नंबर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्डियन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जब तक 35 इयर्स के होते हो आपका मूलांक एक्टिव होता है। आफ्टर 35 इयर्स आपका भाग्यांक एक्टिव होता है। बट जब आप सीखते हो, आप पूरा कंप्लीट सिस्टम सीखते हो, बिकॉज अगर आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास तो दोनों टाइप के क्लाइंट्स होंगे। हाँ जी। तो आप इसको एक पूरा कंप्लीट सिस्टम को सीखते हो। और किसी भी, अगर आप बच्चे का सपोजिंग नाम कर रहे हो, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि जब आप कोई आपसे बेबी नेम करवा रहा है तब तो आप ऐसा नाम दोगे ना जो उसके मूलांक और भाग्यांक दोनों से अलाइंड हो, क्योंकि जब हाँ जी, दोनों को सपोर्टिव हो। एग्जैक्टली। तो सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ। However, आपका जब तक आप 35 साल के होते हो आपका मूलांक एक्टिव होता है, 35 साल के बाद आपका भाग्यांक ज्यादा एक्टिव होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीवन एल्स? Okay, so we'll share the course details and okay, so Kanchan ji, आप पूछ रहे थे कि what all will be covered in the course. So there is a lot of things जो हम लोग cover करेंगे। सबसे पहले जो numbers है,
and why Chaldean system, tug of जो different systems में confusion है, why that. उसके बाद then we will start breaking the numbers, as we said, मूलांक जो हम लोग birth date numbers बोलते हैं, destiny number, life path number, then name number से हमारे lot of numbers come which we call expression number, soul urge number, secret self number, then single numbers and compound numbers की क्या difference होते हैं. हमारे चार्ट में there is not just one number which is important, there are lot of numbers जो बहुत important role play करते हैं. Then maturity, attitude, आप देख सकते हो यहाँ पे I have mentioned everything in detail जो हम लोग each and everything cover करेंगे. Karmic lessons, which is very important aspect. I'm sure you all are familiar with karma, karmic lessons. So how numbers also help you understand that. कोई बोलता है ना कि मैं तो इतना पढ़ता हूँ या इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, no matter what. So we check that also if it is coming from some of your karma. तो हम उसका भी समझते हैं, understand करते हैं, then we do the remedies also for that. What are your challenge numbers? Particular kind of problem आपके life में बार बार क्यों आ रहा है? We understand that from our challenge numbers. Then as I told you कि आप एक system सीखते हो तो you can do numerous services. So we do house numbers, your baby numbers, company numbers, आपके pinnacle phases क्या है, and definitely name correction हम लोग करते हैं, which is the most important thing in numerology. और जो भी इस कोर्स के लिए इनरोल करेगा उनका नेम करेक्शन they will do under my guidance live in the class. So that yours is done along with the course, and we will do multiple more name corrections during the course to give you that kind of confidence and hands-on practice. And once you are completed with the course, you can practice it independently along with my support throughout. We are always as a support there present on the WhatsApp जो आपको lifelong support मिलता है. And this course is offered right now at 8,600. However, it is just one-time offer which we are giving. After that, it will be 24,000, which is the original price, which is the price at which I have always been doing my courses. It is just the first time that I am offering it at such a discounted price. So this is just because you all have joined in for the webinar. So ये exclusively आप लोग के लिए offer है, which is valid till today and tomorrow, and after that the price will go up to 24,000. So in this you will also get a manual which will be there for you. आप उसको refer कर सकते हो. As I said, you will have WhatsApp support. You will also get the recordings of the sessions which we do, so you can refer to it later also. So it is kind of with doing one time you can have multiple revisions, and you will have all of it with you, and obviously you will get a certificate of completion as well. So yes, that's about the course. And if anyone has any more question, Akriti, we are going to start it tentatively from 2nd of December. And it will be a 10-day course. We will do it continuously for 10 days. So 2nd to 11 December is the tentative date. Sumita, Kua number is in Loshu. It is in Chinese numerology. In Chaldean, there is no Kua number. So when you do Loshu, I do Loshu grid also. I teach Loshu. So Kua number usme aata hai, which we call is your secret lucky number. Any more questions? Rupa ji, name number is a little difficult to teach right now, because अगर आपको alphabets के numbers नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे. And I'm sure not everyone in the class knows alphabet numbers. So name numbers, it's better when we do in the class, so that you have a proper practice and understanding. Yes, Pankaj ji, Loshu. It's Loshu. It's not Lushu. मैम जो लूशु ग्रिड है वो एक्चुअली में तो
क्या नाम है, इंडिया के अंदर जो सूर्य यंत्र है, सूर्य यंत्र को ही अगर उल्टा कर दें तो ही तो बनी है ये लूशु ग्रिड, क्योंकि उसके जो नंबरिंग है मैंने पूरा उसका देखा था, तो सारा के सारा वही है। हाँ, तो ये लोशु ग्रिड, लेकिन इंडिया में जो यंत्र है उसमें भी सेम नंबर्स है। इस ग्रिड को ना आप टर्न कर करके यस मैम, हाँ, तो साउथ उसको अलग ऊपर है, अलग नॉर्थ नीचे। करेक्ट। सो बट ये आया है चाइना से, वो बोलते हैं ना टॉर्टाइज के ऊपर दोज नंबर्स हैड कम एंड दैट इज हाउ इट हैड इवॉल्व्ड। तो ओके लोशु मैम, जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी का बेस ही लोशु है, एंड ऑन द बेस्ड ऑफ लोशु आप ये नंबर्स का रेमेडी नहीं, एज इन नेम करेक्शन नहीं करते हो, यू कैन गिव अदर रेमेडीज, यू नो। हम लोग यस उसमें मैम। डायरेक्शंस एंड स्पेस के साथ वर्क करते हैं। हाँ, वो पूरा पूरा वास्तु के अंतर्गत आ गया क्योंकि। करेक्ट। ठीक है मैम। Swati, you wanted to ask something? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I just wanted to understand कि जैसे अभी आपने बताया कि चाल्डियन है, पाइथागोरस है और लोशु है, तो इनके रिजल्ट्स में कुछ डिफरेंस आता है क्या? नहीं. See, it's about your faith. If as a numerologist I'm practicing Chaldean, and अगर if I'm doing with the faith कि Chaldean से I'm with the whole system, तो आपको उससे ही अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा. बट अगर मुझे दोनों सिस्टम आता है तो obviously I will want to give my clients the best. So if I am doing name correction or remedy for anyone, I will give the best of all the three systems which I practice. However, आप एक सिस्टम से भी देते हो तो it is equally effective. आज I'll repeat this again, जो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, they work only with one system and that is Chaldean. ओके, तो जैसे फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि वी वांट बेटर बेनिफिट्स और वी वांट टू गाइड मच बेटर टू आवर क्लाइंट्स, तो वी विल नीड टू लर्न द लोशु इन पाइथागोरन इन फ्यूचर और ओनली चाल्डियन विल बी इनफ? See, only Chaldean is very good enough. अगर आपको देखिए, learning has no end. If you want to add more things to your kitty, अब अगर आप सपोजिंग Chaldean सीखते हो, उसके बाद आपको लगे कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स को और डिटेल्ड एनालिसिस देना चाहती हूँ कि जिसमें मैं उनको बताऊं कि आपका आज का दिन भी कैसा रहेगा, अगर कोई जानना चाहता है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू लर्न पाइथागोरियन. अगर अब आप उसको और भी रेमेडीज देना चाहते हो कि आप स्पेस के साथ वर्क करो, तो आपको लोशूस भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अगेन फेंगशुई बेस्ड. तो उसमें आप एक चीज के लिए क्लाइंट्स को मल्टीपल रेमेडीज दे सकते हो. सो बट दीज आर ग्रेजुअल स्टेप. आप एक चाइल्डियन सीख के भी यू कैन गिव देम इनफ रेमेडीज एंड इनफ, जो उनका सिस्टम का जो बेस्ट होता है ना, आप उनको दे के, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. So it's not that कि आपको सीखना ही है, it's just about your want कि आपको और ज्यादा प्रोग्रेस करना है या आपको और ज्यादा सीखने का इच्छा है. ओके, तो इसमें कवर्ड होगी. Your voice is cracking. Sorry, I didn't get the last part. इसमें सारी रेमेडीज भी कवर्ड होगी ना चाल्डियन में? Yes. ओके, ओके मैम. Vedic numerology is, again, it is based on our Vedas, and it is little different, but more prevalent is, as I told you, Chaldean and Pythagorean. अगर आप बोलो तो there is then again Cairo also. So there are lots and lots of systems of numerology. However, I'm not covering all of it here because जो सबसे ज्यादा prevalent है, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे. Yes, मैम. हाँ. जैसे आपने कहा कि पाइथागोरियन ज्यादा डिटेल्ड है, तो फिर वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा एक्यूरेट होता है चाल्डियन से? No, nothing like that. And for the beginners, we don't even recommend a Pythagorean because Chaldean is the base. अगर आप सीधा Pythagorean सीखोगे तो you will get confused as well. ओके, सो अब मतलब पाइथागोरियन से पहले इट्स रिकमेंडेड कि चाल्डियन आपको पता हो? It is definitely recommended कि आप पहले Chaldean सीखो. ओके, थैंक यू. Siddharth ji, you wanted to ask. Yes, good afternoon. Namaste, pranam. आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है. If you can be little louder. Yes, ma'am.
गुड आफ्टरनून, प्रणाम। गुड आफ्टरनून, प्रणाम, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, मैं गांव से हूँ। गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनका डीओ डेट ऑफ बर्थ मालूम है ही नहीं, और कुछ का है भी तो फ्लॉड आया, फ्लॉड में सब वॉश आउट हो गया। तो इस स्थिति में इसका सोल्यूशन क्या है? जिसका डेट ऑफ बर्थ कम्प्लीटली मालूम नहीं हो तो कैसे अगर निकाल? आपको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बट अगर आप कोई भी डेट पे बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हो तो नहीं, हम एक जस्ट गाँव में तो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, डेट ऑफ बर्थ मनाते ही नहीं है। गाँव डेट ऑफ बर्थ मनाने का सिस्टम तो हम शहर में देखते हैं, गाँव में नहीं मनाते कोई। खाने के लिए जिसको पैसा नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से बनाएगा? तो इस स्थिति में इसका मूलांक और भागांक कैसे निकाला जाएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं हो? जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब हम उनका न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते हैं। बट वही मैं बोल रही हूँ, बहुत से लोग होते हैं जिनको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, बट ऐसे लोग होते हैं, मैं गांव का पर्टिकुलरली नहीं बोल रही हूँ, बट शहर में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि दे आर सेलिब्रेटिंग, उन लोग अपना एक डेट पे हर साल बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमको उसी नंबर का वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाता है, तब हम उनका मूलांक और भागांक उस डेट को लेके निकालते हैं। बट अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ भी आपको नहीं पता है, ना ही ऐसा कोई डेट है जिसमें आप हर साल अपना जन्मदिन मनाते हो, तब न्यूमरोलॉजी उनका करना मुश्किल है। डीओ भी अगर पता नहीं है तो कैसे? मैम, ये अभी तक कोई ऐसा साइंस है जो मैं नेट में भी सर्च कर रहा था, तो यू आर राइट, दे आर नॉट गिविंग एनी थिंग्स इन डिटेल्स कि डीओ भी नहीं हो। तो मैंने एक जैपनीज को भी मेल किया, वो सब वही बात कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई है नहीं प्रेडिक्ट करने वाला है। जब डीओ भी नहीं तो आपको देखिए, मालूम। गलत बात तो बता के कोई फायदा नहीं है ना। मैं बोल दूं कि नहीं नहीं हम लोग उनका कर सकते हैं कोई भी ये डेट लेके, तो बट दैट विल बी मिसलीडिंग। जब न्यूमरोलॉजी नंबर्स पर ही बेस्ड है, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ ही हमें नहीं पता है और कोई ऐसा दिन भी नहीं है कि सालों साल से वो उसमें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, तब उनका न्यूमरोलॉजी करना मुश्किल है। हम उनके नाम का नंबर्स निकाल सकते हैं, बट अब वो उनके जन्म के नंबर से कितना अलाइनमेंट में है कि नहीं है, वो तो हम नहीं जान पाएंगे ना। तो और एक और बात मैम, जैसे गांव में लोग, मैं गांव से हूँ, गांव में लोग तो नियम ये राशि सीधे जैसे जो मन में आया वो नाम रख दिया, सपोज संजय विजय, तो वो भी तो ठीक है, राशि के अनुसार तो रखते नहीं है नाम। तो जो मन में आया, मदर फादर को जो मन में आया वो नाम देखो, सिंपली वो नाम रख देते। वो भी तो नियम से भी तो एक्चुअल कुछ लिंक नहीं होता है, नहीं? हाँ, तो वही तो बोल रहे ना, नाम चलिए जो भी आया माता पिता को रख लिए, बट अगर हमको उनका नाम पता है और डेट पता है तो हम उसमें फिर न्यूमरोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एक भी चीज नहीं पता है तब मुश्किल है अप्लाई करना। जैसे कि एक उसका मुझे मालूम है कि डीओ भी नहीं पता था, वो एक से करवाया, वो नाम भी एक्सटेंडम रखा हुआ है, तो उस नाम से वो करवाया, उसको कुछ सक्सेस नहीं मिला। हाँ, तो क्योंकि उनको डीओ भी नहीं पता है तो इसीलिए किसी ने अब उनको बस पैसे के लिए कर दिया, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। यस, हम ऑनेस्टी आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये तो संभव ही नहीं है, जबकि उसका पैसा भी ले लिया, काम भी नहीं हुआ। वही मैं बोल रही हूँ, वो किसी ने बस पैसे लेने के लिए कर दिया, बट विदाउट डेट ऑफ बर्थ नहीं पॉसिबल है न्यूमरोलॉजी। थैंक यू मैम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सुनीता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन नहीं है, जैसे किसी पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम उसके नेम से भी तो ड्राइवर कंडक्टर निकाल सकते हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होता है मैम। एक्यूरेट तो नहीं होता है, मे बी हम कुछ पॉसिबल कर सकते हैं उसे। अब पॉसिबल करने के लिए हम लोग कुछ भी, बट उनका वही पूछना था ना कि देखिए उसको हम लोग एक्चुअली एक्यूरेट नहीं, मैं भी बहुत केस देख चुका हूँ, पैसा भी चला गया, लेकिन मैं सॉरी टू से कुछ भी काम वो नहीं एक्यूरेट नहीं होता है। आपको अगर डेट ऑफ बर्थ जन्म का नहीं भी पता है, जो मैंने कहा कि होता है ना, बहुत लोग होता है कि हमारी जनरेशन में हमारे माता पिता को भी बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बट हर साल से उन लोग एक पर्टिकुलर डेट पे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो भी क्योंकि आप इतने साल से मना रहे हो तो आपको उस डेट का वाइब्रेशन मिलने लग जाता है, उस केस में एक्यूरेट होता है। लेकिन अगर दोनों ही केस नहीं है, आप जो बोल रहे हो ड्राइवर कंडक्टर नंबर कर सकते हैं, बट उसमें एक्यूरेसी नहीं आता है। 30-40% तो मैच करता होगा। नहीं कर रहा है। जैसे मैम एक बात, कोई सर्टिफिकेट में
अटेंडर जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, उससे काम करेगा मैम? हाँ, उससे हो जाएगा। सर्टिफिकेट नेम से तो वाइब्रेशन मिल रही है ना, जैसे अगर मेरा नाम है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है तो उससे हो जाएगा। किसी का मेरे जैसे नेम से भी वाइब्रेशन मिल रही है, यदि हम उससे भी अपना ये डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर निकाल लें तो 30-40% में भी। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि बट वो मे बी वाला केस हो जाता है, जी जी वो एक डाउट वाला केस हो जाता है, उसमें पूरी एक्यूरेसी नहीं आती है। वो तो नहीं आते, लेकिन फिर भी 50% समथिंग हाँ, आती किसी को अगर ट्राई करना है तो हम कर सकते हैं। ट्राई कर सकते, 50% आती है। राइट। मैंने भी कोर्स किया हुआ है ना, तो मैंने भी सीखा था ये चीज। ये जस्ट मतलब प्रेडिक्शन ही, आप एक्चुअली काम बहुत कम ही करते आपका आवाज नहीं आ रहा है सिद्धार्थ जी क्लियरली। जी। मैंने जो 4-5 मेरे गांव के लोग इधर आकर के कुछ सीखे, खास करके लॉकडाउन में सब बैठे थे घर में ही, जो शहर में काम करते थे गांव पे, मैं तो गांव में ही हूँ, तो वो लोग ये काम सब करवाए, लेकिन मैंने 5 केस देखा, किसी ने काम नहीं किया जिसका ओरिजिनल। फिर 1-2 केस है जिसका ओरिजिनल डीओबी था, हम किसी को दोष नहीं दे, जिसका ओरिजिनल डीओबी था उनका अच्छा काम किया थे। वो नंबर, लकी नंबर क्या क्या दे दिए हैं, तो उनका बिजनेस भी ग्रोथ हुआ है। लेकिन कोई मतलब नेम से, इवन एक आदमी सर्टिफिकेट भी नहीं, वो पढ़ा हुआ तो है ही नहीं, उनका जो पहचान पत्र था, ये पान कार्ड में डेट ऑफ बर्थ था उससे बनवाए, इलेक्शन कार्ड था उससे बनवाए, उससे भी नहीं काम, क्योंकि वो लोग तो रेंडम रखे, कोई अपना ओरिजिनल रखे नहीं। गांव में तो लोग डीओबी लिख के रखते ही नहीं थे पहले, अब लिखने लगे। हाँ, सही बात है। और कोई क्वेश्चन है? मैम आधार कार्ड में भी तो नाम लिखवाते होंगे ना लोग, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आधार कार्ड तो आजकल सबका बनता है। हाँ, तो बट उसके भी तो कुछ तो आई एम श्योर नियम होते होंगे ना, आपको कुछ तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है एज अ प्रूफ। तो फिर जैसे मैम मैंने सपोज करो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैंने कुछ भी डेट ऑफ बर्थ मान के अपना आधार कार्ड बनवा दिया, तो मुझे वाइब्रेशन तो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ देके बनवाए हो तो मतलब कि आप उस नंबर को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो उसका वाइब्रेशन आपको मिल रहा है, तो हम लोग उसी नंबर को लेके वर्क करेंगे। नंबर को लेके हम उसका एनालिसिस करते हैं। एकदम। अब जैसे बहुत जन स्कूल में एडमिशन के टाइम गलत डेट देते हैं, राइट, बट उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, लेकिन जो स्कूल का जो डेट ऑफ बर्थ है उन लोग उसी को मानने लग जाते हैं और उसी को अपना जन्मदिन भी उसी डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग जब न्यूमरोलॉजी करेंगे तो उसी डेट को लेके करेंगे। उन लोग अपना ओरिजिनल जानते हैं तो भी हम लोग, क्योंकि आपको वाइब्रेशन तो उस डेट का मिल रहा है ना। कोई भी मैम इससे कंक्लूजन में ये आया कि कोई भी जो प्रूफ उसके पास है और वहां पर जो डीओबी लिखी हुई है उसको मान करके मूलांक भागांक निकाले तो वो काम आप करना उसको अपना ले रहे हो ना, तो आपको उसका वाइब्रेशन मिल रहा है। 100 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 50-60% लेकिन बहुत हद तक मिलेगा। और फिर जब हम लोग आपका नाम को उसके अलाइनमेंट में ला के उसमें वर्क करेंगे तो फिर आपको उसमें चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। नेम के फर्स्ट अल्फाबेट से भी तो हम बहुत कुछ पता कर लेते, तो ऐसे व्यक्ति का नेम है हम उससे भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। एकदम, हम लोग नाम का भी जो नंबर्स आते हैं, नाम से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हमें पता चलते हैं, तो उनसे भी पता चलता है। यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी का बात हो रहा है, तो दैट इज वाई मैंने कहा कि उन दोनों के बिना आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलने में मे भी हम उसको थोड़ा सर्टिफाइड कर सकते हैं बंदे को। यदि कोई मेरे पास आता है ऐसा बंदा, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ लीजिए, मेरा प्रेडिक्शन कर दीजिए, आप मेरे बारे में कुछ बताइए, उसने अपना नेम बताया हमको, तो हम नेम से नेम कुछ कर के बेस पे आप डेफिनेटली कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बट मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि अगर आप बोलोगे कि कंप्लीट पूरा एक्यूरेट हो, जब तक हम वो नहीं पॉसिबल है, कंप्लीट नहीं हो। राइट। एनी मोर क्वेश्चंस? Ma'am, I just wanted to ask, will there be any different timing also for batch? I mean, if in case this timing is not suitable. Yes, you can let me know. Like I'm thinking of a morning batch also. So if that is more suitable, you can join that batch as well. Morning would be like what time? Either 10 to 11:30 or 11 to 12:30. Okay.
Okay, ma'am. And also, ma'am, I just wanted to understand, like you said, you will be providing the certificate of IPHM. Right. So, is it that something or a kind of a certificate which is globally verified, or? Yes, it is basically the highest body which certifies this holistic healing. So once you are Okay. certified under that, you are kind of, it's kind of a proof. If anyone asks you whether you are certified and you have a certification from that, you are a certified numerologist. You can practice. Okay. And ma'am, this course is like basic numerology course, or it covers basic and advanced both? It How is covers it? the entire Chaldean course. So basically, once you do this course, you are completely thorough with Chaldean. You don't have to study Chaldean separately anymore. But there are advanced levels also in case if we want to or wish to do. See, advanced level is again then a different system. Like if you want to do, Pythagorean or Loshu or Kabbalah, but Chaldean, you would get the complete knowledge. Okay. 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 Well, ma'am, will there be like practice sessions, or this will be like just the portion and what you will be teaching we have to learn? No, it will be a complete, along with the learning, we'll do the practice also. You will be asking as many questions as you want. And, we would be doing a lot of practice in the class also. So like when supposing today we are doing life path number or destiny number. So I will tell you to do, a lot of calculations. You can take up the charts and the numbers of yourself, your family members. So when we do the class, mostly people do at least 4 to 5 charts. आप अपने पूरे immediate family का तो charts class में ही पूरा कर लेते हो, समझ लेते हो, corrections कर लेते हो. So that ways you get the practice also, you learn also. Okay. और एक और क्वेश्चन था मैम, इसमें कुछ ऐसा जरूरी है क्या कि योर मैथ्स शुड बी गुड और समथिंग Not लाइक at all, not at all. I just wanted to ask because my maths is not good, so I thought let me ask. Nothing. As long as you can do 1 plus 2 plus 3, you are good to go. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much for answering all the questions, ma'am. Thank you. Yes. Any more questions? So I'm sharing the link again. If anyone wants to register, you can do that using the link. It's 8,600 for today and tomorrow, and then the prices will be at the original price only. So do not miss this opportunity. And we'll be starting from 2nd of December. Batch timings, we can, have a morning batch also if we have enough enrollments for the morning timing. So I'll keep it till here. If you have any more questions, you can let me know, or I'll open the WhatsApp group also for the next few hours. If you have any more queries, you can put in your questions over there as well. Right. Okay, in that case, I'll just end the meeting, and thank you everyone for joining in. And it was lovely meeting all of you. Thank you so much.